And our top focus this news wheel. India and the United Kingdom have signed the historic free trade agreement. Prime Minister Modi met with his British counterpart Keir Starmer at the Chequers estate. This is in central England. After signing the agreement, both the leaders met together and briefed the media. The India-UK free trade agreement will significantly be improving market access for Indian goods and will also boost bilateral trade by around $34 billion annually. The two prime ministers will also unveil a UK-India Vision 2035 to take their partnership to greater heights in a time of rapid global change. The highlight was, of course, Prime Minister Modi's curry dig. He said that we Indians don't just bring curry, but also creativity, commitment, and character to the United Kingdom. He also thanked Prime Minister Starmer for the rousing welcome and condemning the Pahalgam attack and inviting him to India as well. A historic free trade agreement that has now been signed between India and the United Kingdom. But beyond the jewelry and, of course, whiskey, we're talking about various Indian goods that will now get greater access into the United Kingdom's markets. And Sir Keir Starmer himself also pointing out that this is going to bring forth £4.8 billion of boost to the United Kingdom's economy, also making room for several jobs for the youth in the United Kingdom. And what this FTA is also essentially, just like the Prime Minister pointed out, a blueprint of the shared legacy of India and United Kingdom. It's going to be a major boost for women entrepreneurs across all sectors in the United Kingdom and a major boost for skilling and job growth avenues for Indian youth in the United Kingdom. A historic free trade agreement that has been penned between the leaders of these two nations, Prime Minister Modi and Keir Starmer. Senior Executive Editor, News 9, Aditya Rajkol, with us here on the broadcast. Aditya, a historic deal that has now been signed between these two great leaders, but the Prime Minister's curry dig is soon going to be catching all the headlines tomorrow across all the newspapers. Some major points that have been put forth in this FTA are the skilling and job avenues opened up for the youth, but also women entrepreneurs are going to get a major boost across all sectors. Over to you. What's the latest here? Well, absolutely. A historic deal, a historic free trade agreement finally being inked between India and the United Kingdom. Kabir, it took 3 long years of negotiations, hectic parlance really taking place between India and UK, both in New Delhi and as well in London as well. Of course, we know that the UK cars and whiskey will be much cheaper to export to India, and the Indian textiles and jewelry cheaper to export to the United Kingdom. But much more is clearly expected out of the deal. We know for a fact that earlier this year, when Trump took presidency of the United States for the second time, he brought in tariffs, massive tariffs, not just for India, but all several emerging markets and countries all across the globe. Perhaps that was the last nail in the coffin that helped really, India and UK come closer, bridge the gaps, and finally ink this very crucial and significant and important deal between the two countries. Apart from that, both these countries, India and UK, have also committed to lay out a roadmap to tackle the menace of illegal immigration that has been, grappling these nations for quite some time. There are a lot of Indians who really, immigrate to UK as well as to European Union and several of the Western countries, many of them through the donkey route, through the illegal route as well. And that's something, a cause of concern for UK. We've seen protests, widespread protests all across the UK against illegal immigration. But back to the FTA, the Piyush Goyal has just tweeted, India's Commerce Minister, congratulating both India and UK to finally, achieve this massive target. Apart from the FTA and apart from what this really brings to the table between these two very significant countries which have had historic and traditional ties for decades and years together, there have been security concerns as well, defense partnership, security concerns, intelligence gathering, and a lot more that was discussed between Indian Prime Minister Narendra Modi and his UK counterpart Keir Starmer minutes ago. Absolutely. Aditya, stay on with us. Let's play out a quick excerpt from that press brief where the Prime Minister specifically spoke about the Pahalgam terror attack. Listen in to what the Prime Minister had to say. पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। Aditya, again the Prime Minister redrawing that red line that there can be no double standards when you're talking about countering terrorism. That's right, Kabir. A very strongly worded condemnation of the Pahalgam terror attack really coming in from UK and the Indian Prime Minister Narendra Modi really welcoming that statement from the United Kingdom against the perpetrators of the Pahalgam terror attack in India's Jammu and Kashmir, but also reflecting the larger cooperation on security and intelligence between India and UK. You'd remember that apart from Pakistan-sponsored terror, there's been the Khalistani terrorism and Khalistani radicalization that has been a cause of concern for India. We heard a couple of days ago, India's Foreign Secretary Vikram Misri highlight that very clearly, that it's not India's problem alone, it's UK's problem as well. There are Khalistanis who've got a safe passage and of course a safe shelter on the UK soil. And there's much more than the talking that the UK government has been doing for a while, but there needs to be significant action. In fact, in the last couple of years, there have been several attacks, intimidation tactics as well by these Khalistani groups against Indian diplomats, particularly the Indian High Commission in London, which came under attack as well. And India's premier investigative agency, NIA, had to launch investigations, releasing wanted posters of UK citizens and Khalistani radicals and terrorists based in London and neighboring areas. So that is something that is being pointed out to UK, being discussed in this bilateral meeting as well. And there's an expectation that there will be assurance from the UK side that tough, significant and result-oriented action will be taken by the UK government. Aditya, the Prime Minister made sure that apart from the FTA and its particulars, this was a quick, short speech, but he went all guns blazing. He spoke about Pahalgam. He also spoke about the Air India crash. Here's the Prime Minister extending condolences to the British families over there. Aditya, with us right on the other side. पिछले महीने अहमदाबाद में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों में कई यूके के नागरिक भाई बहन भी थे। उनके परिवार वालों के प्रति हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। Well, Aditya, the Prime Minister, of course, extending condolences because on the day of his landing, the Daily Mail had come out with that body mix-up headline as well. But the MEA, acting really swiftly, dispelling all those news, saying that we're working in tandem with the authorities. We did speak about that as well. And the Prime Minister now embalming all of those wounds as well. Well, that's right. In fact, Prime Minister expressing condolences, not just for the Indian families, but the families of those UK nationals who lost their lives in that unfortunate Air India crash a few weeks ago in Ahmedabad, the Air India that was on way from Ahmedabad to, in fact, Gatwick in London. But yes, it seems to be true that there has to be, unfortunately, some kind of a mix-up while the DNA samples were being collected. But in such circumstances where a large chunk of dead bodies are there and they have been burned together, unfortunately, in that plane crash, the DNA mix-up unfortunately does happen. And this is common in such air accidents. And that's what the Indian government has said, that when concerns were pointed out, immediately action was taken by the government of India. And India is in touch with the UK authorities and their counterparts to, in fact, prevent any such further, occurrence. And of course, everything possible is being done, not just by the Aviation Ministry, but by the Ministry of External Affairs as well. It's an unfortunate accident. Investigations are underway to know the root cause, but whatever can be done for the families who have been affected by that, perhaps is being done by the Indian government.
So, Aditya, all in all, I think a historic deal that's been signed between India and the United Kingdom. You rightly pointed out it's been 3 years in the making. Piyush Goyal's exact tweet explains it all. About $56 billion in trade today, set to double by 2030. But at the same time, and we are going to play out that excerpt as well, the Prime Minister took a veiled dig as well, saying that us Indians don't just bring curry to the United Kingdom, we also bring characteristics, we also bring culture and creativity to United Kingdom when we go there. Absolutely, very fine words by the Indian Prime Minister. India is known for the curry, the great chicken tikka masala that's famous on the streets of London and elsewhere in the United Kingdom. But Indians are known for their integrity, they're known for their character, and of course for bringing in culture significantly, not just to UK but all across the globe. You can go and roam around on the streets of United Kingdom and you'll know that a great workforce, be it from information technology to any other field, there are Indians out there who are the most talented ones, and this is the world over. Indians immigrate, they study in India, they study abroad, but they finally immigrate and are really helpful for the rise of several companies all across the globe. We've seen that in the US as well, with the top CEOs and top managements being led by Indian professionals, and same is the case with UK. The Prime Minister very correctly pointed out that let's not define Indians only for the curry that they bring on the table, but they bring much more, and the topmost being the character and of course culture. Well, the curry would have been good enough in its own as well, Aditya. It's great that we also bring creativity, a lot of culture and character to United Kingdom as well. Here's the Prime Minister taking that veiled dig, and we'll talk about how the MSME sector is going to get a major boost through the FTA right on the other side. Here's the Prime Minister's veiled dig on Indians not just bringing curry to the United Kingdom. यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं. दे डिड नॉट जस्ट ब्रिंग करी फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो क्रिएटिविटी, कमिटमेंट एंड कैरेक्टर. इनका योगदान सिर्फ यूके की समृद्ध इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूके के कल्चर, स्पोर्ट्स और पब्लिक सर्विस में भी दिखता है. Aditya, many thanks for joining us here on the broadcast here, helping us out, put this story into context. We're going to keep coming back to you as in when that audience with King Charles, because that's going to be a great, picture moment for the Prime Minister and, of course, the 140 billion Indians that are going to be waiting with bated breath to catch a glimpse of the Prime Minister with King Charles as well. And, of course, Maldives next on the list for Prime Minister in Male. A high diplomatic fever pitch discussions are also expected on that particular front when it comes to India's own neighborhood and maritime security as well. But on that particular front, the Prime Minister made quite sure to tell the Indians back at home that with the advent of the free trade agreement, it's the MSME sector which will get a major boost with open access to the British markets. Listen in. ये समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है. एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा. भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे. भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा. वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट्स सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे. And we both know this is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU.
And I think I can say that it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. Well, Vouch on News 9 to bring you all the latest details vis-a-vis Prime Minister Narendra Modi's visit to the United Kingdom, his fourth visit to the UK since 2014. But shifting our focus here to Bihar and the entire cacophony around the special intensive revision. High drama unfolded in the Bihar Assembly yet again as clashes broke out inside the State Assembly. Take a look at some of these visuals. The marshals, back to back, the second consecutive day being brought into action. Tensions escalated as the ruling party and the opposition MLAs came to blows right inside the House. During a heated discussion on the special intensive revision, legislators from both sides surged towards each other. What followed was utter chaos, a full-blown scuffle right in the middle of the assembly, the well of the Bihar Vidhan Sabha. Marshals had to step in to separate the two sides, but even after the proceedings were adjourned, the ruckus did not stop. MLAs continued to clash outside the House, outside the Vidhan Sabha premises as well. And in the middle of it all, BJP MLA Sanjay Kumar smashed a microphone in protest. The Bihar Assembly. Scuffle between the opposition and the ruling MLAs and the marshals having to intervene to pull both the legislators aside. Now, amid the heated scenes in the Bihar Assembly, there's a major statement that has come from Bihar's leader of opposition, Tejashwi Yadav. He has alleged that BJP MLA Janak Singh hurled abusive language at him right inside the House, and he's demanded that the Assembly's video recordings be reviewed to expose the truth. Take a listen to some of the political reactions that are coming on the second day of this scuffle between the opposition and the ruling MLAs in the Bihar Assembly over the special intensive revision. जनक सिंह जो है छपरा से ही कहीं से विधायक है, तरैया के विधायक है, इंजीनियरों से डॉक्टरों से रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति है, कमीशन मांगने वाला व्यक्ति है। पूरा छपरा जिला और पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट परिचित है उस व्यक्ति से। सभी लोग परेशान हैं। खड़ा होकर के एक बार नहीं कई बार खड़ा हुआ और खड़ा होकर के मेरे को माँ बहनों की गालियाँ जो है भाजपा के जनक सिंह ने मेरे को माँ बहनों की लगातार गालियाँ दी। और एक पीछे से अशोक सिंह जो आते हैं वो माइक तोड़ते हैं। संजय सिंह एक संजय सिंह है विधायक, मोराठा बांधे हुए रहते हैं, लालगंज के विधायक हैं और उन्होंने माइक भी तोड़ा। अब सदन में क्या बच गया बताओ? सत्ता पक्ष के लोग, जब उप मुख्यमंत्री ऐसा है, जब लीडरशिप ही ऐसा है, तो उनके सदस्य कैसे होंगे? देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, सदन की गरिमा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को रखने की जरूरत है। कल भी जिस तरह से इन लोगों ने अभद्र शब्द का प्रयोग करना, गुंडे की भाषा में उंगली दिखा कर करके उत्तेजित करना, ये मानसिकता जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोगों का इतने दिनों के बाद भी बरकरार है। जनता इनको पूरी तरह से जवाब दे चुकी है विधानसभा लोकसभा में, लेकिन अहंकार नहीं टूटा है। चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और गुंडा पार्टी साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस नाथूराम गौडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किया है उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना,
अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? अशोभनीय बात है। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। जो जनता का मुद्दा है उसको। Well, a lot of political reactions. With me on the broadcast, Ajay Alok of the BJP and Mrityunjay Jha of the RJD party with us on the broadcast. A very warm welcome to both of you. Mrityunjay ji, दूसरा लगातार दिन और मार्शल्स को बीच में आना पड़ा। क्या कुछ हुआ आज बिहार की असेंबली में, बताना चाहेंगे दर्शकों को? पहले तो हमारा नाम आप सुधार लें, मृत्युंजय तिवारी बोल रहा हूँ। मृत्युंजय तिवारी जी, माफ कर दीजिए जी। देखिए, विधानसभा में ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ विपक्ष की आवाज जनता की आवाज होती है। विपक्ष के सवालों का जवाब देना सत्ताधारी लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है। हम जनता के सवाल पूछ रहे हैं और लगातार सरकार में बैठे लोग मनमानी कर रहे हैं। फिर जनता का जवाब पूछने सरकार विपक्ष है, विपक्ष मजबूत है। हिटलरशाही, तानाशाही, मनमानी तो कोई लगता लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप मृत्युंजय तिवारी जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। आपका फोनर एक बारी फिर से पैच करने की कोशिश करते हैं। अजय आलोक जी हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आप किस प्रकार से तेजस्वी यादव का जवाब देना चाहेंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम पर गालियां दी जा रही हैं, सदन के बीचों बीच सदन की गरिमा को बिल्कुल कहीं उजाड़ कर कहीं फेंक दिया है दूर। गाली तो तेजस्वी दे रहे हैं, उनको किसने गाली दी? सम्राट चौधरी ने सच, पिताजी चोर हैं, आपके पिताजी को सजा मिली हुई है, सदा याफ्ता के आपके बेटे हैं, आप क्या बोलेंगे? इसको गाली थोड़ी ना कहते हैं। सच बोलना गाली नहीं होती है। गाली तो वो दे रहे हैं लगातार सदन में। पहले सूत्र को क्या बोला पूरे सारे पत्रकारों को लेके, उसके बाद रोज दिन कुछ ना कुछ, कभी मंत्री को बंदर बोल दे रहे हैं, सदन के अंदर के बंदर की तरह उछल रहे हो। कभी हमारे एक और मंत्री को मूत्र की तरह इशारा करते हैं सदन में। तो ये देखिए, नेताओं की भाषा और नेताओं की बॉडी लैंग्वेज जो बदलती है ना, तो वो कहीं ना कहीं मानसिक व्यथा दिखाती है कि कितने मानसिक व्यथा से पीड़ित है। तो ये पीड़ित चलेगा, ये पीड़ा अभी 3 महीने तक चलेगी। बिहार विधानसभा का जब रिजल्ट आएगा, ये लोग वॉश आउट हो जाएंगे, उसके बाद भी ये पीड़ा चलेगी। एक्चुअली अगले सरकार में हमें 2000 करोड़ का बजट बढ़ाना पड़ेगा मेडिकल में, क्योंकि मानसिक आरोग्यशाला की बहुत जरूरत पड़ेगी बिहार में। वो हम लोग विचार कर रहे हैं अभी से। अजय आलोक जी, तेजस्वी यादव ने ये भी कहा और महागठबंधन में आई थिंक कांग्रेस से भी एक रिएक्शन इस प्रकार का आया है कि अब चुनावों का बॉयकॉट कर दिया जाएगा। इसको बीजेपी किस प्रकार से देख रही है? मुझे तो बिल्कुल लगता है कि इन लोगों को चुनाव को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि जब आपको रेफरी पे भरोसा नहीं है, बार बार आप रेफरी पे इल्जाम लगाते हो, चुनाव आयोग पे या तो ईवीएम पे इल्जाम लगाओगे, वोटर लिस्ट पे। फिर बोला अजय आलोक जी कि ऐसा आपको लग रहा है कि वी आर नॉट वॉचिंग बट वी विल नॉट लेट यू गेट अवे विद दिस, आपको ऐसे छोड़ नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी का आज फिर बयान आया। अरे तो पहले तय कर लेना, बायकॉट करना तो बायकॉट कर रहे हैं। वैसे खेलना नहीं चाहिए ऐसा मैच जहां पे रेफरी पे भरोसा नहीं। कोई क्रिकेट मैच में अगर रेफरी पे भरोसा नहीं हो तो वो मैच नहीं खेलना चाहिए। और ये विधानसभा की डेली तस्वीरें आ रही हैं अजय आलोक जी, बाहर दर्शक भी देख रहे हैं, व्यूअर्स आर वाचिंग। क्या मैसेज जा रहा होगा? लगातार दूसरा दिन और सदन की गरिमा इस प्रकार से टीवी पर दिख रही है लोगों को। कल आपका शो देख रहा था, आपके शो में लोग घूम घूम के बिहार में पूछ रहे थे कि नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं, तो 90% लोग कह रहे थे कि नहीं, नेता को पढ़ा लिखा, और सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, उच्च पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब जब सदन के नेता विपक्ष 8वीं फेल होंगे, या सॉरी 8वीं पास 9वीं फेल, तो यही ऐसा ही सदन चलेगा। क्या आपको उम्मीद कर लगती है? तेजस्वी यादव ये भी डिमांड कर रहे हैं कि अब सारी सीसीटीवी फुटेज और जो सदन की प्रोसीडिंग्स थी, उसको भी, विधानसभा की जो प्रोसीडिंग्स थी उनको भी इंटेरोगेट और इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या उनको गाली दी गई कि नहीं दी गई। अरे खुले आप मंत्री को बंदर बोल रहे हैं, सदन में माफी मांग रहे हैं, गाली वो दे रहे हैं। हम लोग कहाँ गाली दे रहे हैं भाई? हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उठ के उनको क्या कहा है कि तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे पिताजी चोर हैं, तुम्हारे पिताजी को कोर्ट से सजा मिली हुई है, चोर का बेटा क्या बोलेगा, बैठो। तो ये सच्चाई बोला है। हाँ ठीक है, उनको ये सच्चाई को सबको ही जानते हैं। ऑलराइट, मृत्युंजय तिवारी आल्सो विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। मृत्युंजय जी, आप भी अजय आलोक जी की बात सुन रहे होंगे, आपका रिस्पांस? देखिए, ऐसा है कि सत्ता का अहंकार जब 7वें आसमान पर होता है तो यही भाषा निकलती है। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि सत्ता के बल पर आप लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते। क्या विपक्ष की
आवाज तो आप दबा देंगे। विपक्ष का काम है जनता के सवालों को उठाना, सत्ताधारी दल से, सत्ता में बैठे लोगों से जवाब मांगना। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप की जो भाषा है, अभी आपने देखा क्या कहा, बीजेपी की भाषा यही है, वो कह रहे हैं कि हाँ बहिष्कार कर देना चाहिए। यानी ये सोच रहे हैं कि हमको सत्ता मिल जाए बैठे बैठाया, हम जनता को वोट से वंचित कर दें और हम सत्ता में फिर आ जाएं। ये सब नहीं तिवारी चल जी, सकता है। दर्शकों को समझा तो दीजिए, बहिष्कार की बात तो चली रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, अब बीजेपी कह रही है कि कर लीजिए बॉयकॉट। तो अभी प्लान क्या है, रणनीति क्या है बॉयकॉट को लेकर? बहिष्कार का अगर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर जनता को वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो फिर चुनाव का क्या मायने मतलब है? चुनाव का कोई मतलब तो होगा। आप सत्ता में बैठे हैं, इसका मतलब कि आपने लोकतंत्र का गला आप नहीं घोट सकते। जनता की आवाज जो है, जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी। लोकतंत्र, संविधान बचना चाहिए, देश बचना चाहिए, सभी कोई है। आज राजनीति का जो दशा और दिशा है वो किस ओर जा रहा है, इस पर लगाम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हम सत्ताधारी दल अगर मतवाला हो जाए तो उस पर नकेल कसना, लगाम लगाना विपक्ष का धर्म है। विपक्ष उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है। चलिए, मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें पैन आउट होती हैं। मृत्युंजय तिवारी जी ऑफ द आरजेडी was with us on the broadcast here. The special intensive revision seems to be a major bone of contention, at least between the ruling and the opposition MLAs in Bihar, second consecutive day, and ruckus in the Bihar Assembly. And take a look at this. In a major twist in the ongoing special intensive revision standoff between the government and the opposition, RJD chairman Tejashwi Yadav has made a startling remark. He said that if the S.I.R. is allowed to be carried out, then RJD contemplates to boycott the upcoming Bihar Assembly election, something that we've been talking about. The opposition party has been alleging that the special intensive revision of the electoral rolls will lead to mass disenfranchisement, and if there is an attempt to rig the upcoming polls in Bihar, then it will be prudent to opt out of the electoral race altogether. हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। Now Tejashwi Yadav, backed by Rahul Gandhi, have trained their guns at the Election Commission as well, saying that the poll body is acting at the behest of the government to carry out vote bandi. In Bihar, opposition has cited examples of Maharashtra and Karnataka where they allege discrepancies in the electoral rolls. And whilst RJD and Congress have consistently raised the issue in the Bihar Assembly, the BJP has reacted to Tejashwi Yadav's poll boycott threat, saying that they have accepted defeat before the elections even began in Bihar. Tejashwi Yadav has made a statement in Bihar, possibly related to national election. There is no national election. There is an election in the state of Bihar, and he has been screaming and shouting about S.I.R. Having said that, he said that he will boycott the elections in Bihar. So if I have to analyze, it can only mean two things. A, he has figured out that there is a complete defeat for the RJD and the alliance partners in the elections in Bihar. B, that he is doing some politics. But for me, if I can make out, he's a serious man. And if he's saying he's going to boycott the election, that means he can see the defeat. उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। 1 अगस्त को जो मतदाता सूची इन लोगों ने पुनरीक्षित आधार पर बनाई है नहीं, उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा 1 अगस्त को, और 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक 1 महीना लगातार उस पर आपत्ति प्रकट करने का समय दिया गया है। तो 1 महीना में लोग अपना नाम चेक करके, या ये लोग हैं, ये लोग चेक करके नहीं बता सकते हैं कि किसका नाम छोड़ दिया, किसका गलत है, बता दे। और चुनाव आयोग कह रहा है कि हम पारदर्शी तरीके से उसका निष्पादन करेंगे, जो कंप्लेनेंट होंगे उनको भी बता देंगे जो क्या स्थिति है। इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या चाहिए?
But now let's also quickly take a look at what happens if the opposition refuses to contest elections. Article 324 grants Election Commission the authority to conduct, control and supervise elections. There's no external body that can obstruct this process by the Election Commission. And the Election Commission is entrusted with ensuring free and fair elections. It's EC's constitutional duty to conduct elections on schedule regardless of how many parties choose to participate or not. And even if only the ruling party fields its candidates, election process must go on. Constitution provides no provision for cancelling elections due to a boycott unless there are extraordinary circumstances. And if there are no opposition candidates, those from the ruling party may be declared elected unopposed. Opposition parties might consider approaching the Supreme Court, and this SC clearly has stated that elections can't be stopped merely because of a boycott coming from the opposition. So the election process will continue to go on if Tejashwi Yadav and the Mahagathbandhan parties do declare to boycott the upcoming assembly elections in Bihar. But next up, a quick parliament roundup as well, because disruptions and protests also dominated day 4 of the monsoon session in the parliament. Both the Lok Sabha and the Rajya Sabha were adjourned till 11 a.m. tomorrow, as opposition members continued their protest demanding a discussion on the special revision of electoral rolls in Bihar. Earlier, the Rajya Sabha was briefly adjourned till 2 p.m. before finally being called off for the day. Despite the chaos, some business was conducted, including discussions on the carriage of goods by sea bill and a farewell to 6 retiring Rajya Sabha members from Tamil Nadu.